अब हम रिकॉर्डिंग शुरू कर रहे हैं और इसके बाद दूसरी बातें नहीं होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Before we start today's seminar, webinar, 37th webinar, I will request Professor Rashid to recite the Holy Quran. Right, sir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. तर्जुमा, और अपने परवरदिगार को दिल ही दिल में आजिज़ी और खौफ से और पस्त आवाज से सुबह शाम याद करते रहो और गाफिल ना होना. सदक़ल्लाहुल अज़ीम. Thank you very much, Professor Rashid. Today's 37th webinar, this is the academic activity with the collaboration of under the umbrella of Pakistan Medical Association and Azad Jammu Kashmir Medical College Muzaffarabad and Women Medical College Abbottabad and Pakistan Association of Pathologists. And now from the last 2 weeks, I am very thankful the President of Pakistan Physiological Society. With the collaboration of all these societies, we are starting this activity. Today's eminent speaker is Professor Rashid. Professor Rashid is a graduate of 1985 from the Khyber Medical College. Professor Rashid is an eminent professor of physiology, and he is also he has written so many articles, more than 20 articles, and Professor Rashid has attended almost more than 100 centuries. He has completed the centuries of national and international speakers. I do not think whenever there is any webinar or workshop or any conference or symposium, and Dr. Rashid is not there. And this all activity we started during the COVID, and Dr. Rashid is always there. And today's topic was very important to discuss. Another eminent speaker, a panelist, is Professor Umar Ali Khan. Professor Umar Ali Khan is a little brother. Professor Amir Ali Khan is my class fellow. And we did the MPhil from the PGMI. Dr. Umar Ali Khan is nowadays president of Pakistan Physiological Society. Dr. Umar Ali Khan did the MPhil, then FCPS, then PhD, almost the same degree like me. And Dr. Umar Ali Khan is a very humble person, and I am highly obliged. His whole family is highly qualified, and his whole family is almost remained professor or at the level of the Dr. Umar Ali Khan is nowadays vice provisee of the ISRA Medical University. And now the topic, today's importance of topic is this health hazards of the noise. हमने देखा है कि जो शोर है हमारी सेहत के ऊपर बहुत कुछ इफेक्ट करता है. That is, I invited the Anam Najam. Anam Najam is a blessing for the Muzaffarabad Medical College. She is working in a CMH. She is attached with Muzaffarabad Azad Jammu Kashmir Medical College Muzaffarabad. She is eminent, not only the eminent psychiatrist. She is a humble therapist, psychological therapist. Especially whenever we hand over the students to the Dr. Anam Najam. She did the MBBS from Abbottabad, and she also did the MCPS from 1916. She is graduate of 11,
and she did the MCPS in 1916, but she did the master from the London, and in recently from the I think before my joining as a principal, she came back, and highly obliged Dr. Anam Najam that as a lady you gave us time. Now it is, I will request all the respected member that you mute your mics except the Dr. Rashid. Dr. Rashid, it is now it is over to you. Now you start your lectures. Right. Thank you. Right. Can you see my screen? It's fine. And voice is also clear? Yes, clear. Right. Sir, before I start, I'm highly thankful to Professor Salma Kundi and you yourself, Professor Mohammed Bukhari, जिन्होंने एक एकेडमिक एक्टिविटी कोविड में स्टार्ट की और ना हमें सिर्फ सीखने का मौका दिया बल्कि हम सबको इतवार के दिन एक दूसरे से मिलजुल कर ऑनलाइन बैठने और डिस्कशन का भी हमें ऐसा दिया, एक दूसरे के हालात भी जान जाते हैं और डिस्कस भी कर देते हैं. माय टॉपिक इज हेल्थ हैजर्ड ऑफ नॉइज. पहले ये 4-5 स्लाइड्स में मैं इसकी हिस्ट्री बता दूं. व्हेन आई वाज एमफिल स्टूडेंट इन अराउंड अबाउट 2000, तो रिसर्च आर्टिकल ढूंढने में मुझे वो इशू हो रहा था, तो उस वक्त के नॉइज और के इफेक्ट्स पे किसी ने टॉपिक बताया. और ये 1999-2000 में उस वक्त सिर्फ ये था कि जो शोर है वो हमारी हियरिंग को इफेक्ट करता है, वो एक वेल नोन फैक्ट थी उस वक्त. लेकिन ये रिसर्च हो रही थी कि क्या ये किसी और चीज को भी इफेक्ट करता है. तो मेरी इस रिसर्च में ये टॉपिक था कि ये ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट को भी इफेक्ट करता है. फिर इसमें मेल्स फीमेल्स का इफेक्ट लिया, उसमें डायस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर, मीन आर्टीरियल प्रेशर, ये सारे पैरामीटर्स लिए और बड़ा स्टडी में देखा. उस वक्त स्टेटिस्टिकल डेटा भी बहुत मुश्किल से निकलते थे, इवन इंटरनेट भी मुश्किल से मिलता था. तो ये बहरहाल प्रूव किया कि ये हार्ट रेट पे और ब्लड प्रेशर पे बड़ा सिग्निफिकेंटली इफेक्ट करता है. और उस वक्त जो लिटरेचर था वो ये बताता था कि ये डाउटफुल है कि किसी और चीज पे इफेक्ट करता है नहीं करता. तो वहां से जब मेरी इंटरेस्ट स्टार्ट हुई, तो एमफिल करने के बाद लोग छोड़ देते हैं, लेकिन मैंने इस टॉपिक को छोड़ा नहीं. जहां भी मुझे मौका मिलता है एनवायरमेंटल कंडीशंस का, एनवायरमेंटल फिजियोलॉजी का, एनवायरमेंटल साइंसेस का, मैं उसमें इंटरेस्ट रखता हूँ. सो आई स्टार्ट विद द वर्ड्स ऑफ एनवायरमेंट. Okay, what is environment and what is environmental science? Environment is everything that is around us. तो जो चीज हमारे इर्द गिर्द है. And environmental science is an interdisciplinary academic field that integrates physical, biological, and information sciences to the study of the environment and the solution of the environmental problems. There are many branches of environmental science, like atmospheric sciences, ecology, environmental chemistry, geosciences, and this is my subject, environmental physiology, which is also called ecophysiology. The environmental physiology is defined as a biological discipline that studies the adaptation of an organism's physiology to environmental conditions. This environmental physiology is concerned with the environment's influence on the physiological function and performance of the living organisms. The environmental physiology investigates the influence of environmental factors on physiological functions in the humans. And these environmental factors which influence the human body, they may be gravity, they include pressure, they include temperature, and they include the sound also, in addition to many other factors. So the pollution. Introduction to contaminants into the natural environment that cause adverse changes is called pollution. तो कोई भी जो environment में ऐसी चीज है जो कि adverse change करती है. Pollution, it may be noise pollution, it may be air pollution, it may be water pollution, and it may be land pollution. But today's presentation is limited to the noise pollution and its effects. So the contents will be in following sequence. What is noise?
What is noise pollution and how it began? How noise is measured? What are sources of noise pollution? What are the adverse effects of noise? Are there any effects of noise on wildlife, marine life, materials, and plants? What is the mechanism behind the health hazard of noise? What are solutions for control of noise? How much is the allowable exposure to noise? What is the noise level of everyday activities and different vehicles? So, definition of noise. There was a small noise when this slide was displayed. So, can we say unwanted noise? ये ड्रम की आवाज किसी के लिए अनवांटेड है, किसी के लिए वांटेड है. So not a complete definition. Definition is subjective because of the fact that one man's sound is another man's noise. Can we define is a wrong sound? No. Wrong sound in the wrong place at the wrong time may be noise. This sound of clap may not be noise at one place, but this was in the middle of the presentation. So this was at the wrong time. So this is also a noise. It disturbed everybody. Sounds that are disagreeable, like the sound of the hammer when you are nailing, are unpleasant, produced by acoustic waves of random intensity and frequencies. And now the latest physiological definition of noise: any audible acoustic energy that adversely affects the physiological or psychological well-being of the people. So ये noise or sound की definition. What is noise pollution and how it began? It is the disturbing and excessive noise that may harm the activity or balance of the human or animal life. Environmental noise is the summary of noise pollution from outside. The term noise pollution has been recently coined to signify the vast cacophony of sounds that are being produced in the modern life, leading to health hazards. How did pollution begin? It began due to more sophisticated lifestyles, due to the growing needs of the people, due to the accelerated rates of human and economic activities, like loudspeakers. Importance of the subject: noise has become a very important stress factor in the environment. WHO stated that noise must be recognized as a major threat to human well-being. So now it is said to be one of the major threats to human well-being. How noise is measured? That is very simple. A very simple, sophisticated instrument is available in the name of sound level meter. And nowadays, many mobiles have these applications also. You can measure with the help of mobile telephone also. Sources of noise pollution. Now there are many sources around us. Transportation systems, construction, industrial noise, loudspeakers, defense exercises, generators, very important, household machines like juicers, fans, and vacuum cleaners, airplanes, boat noise, television, music, and many other sources. Now, very important, the adverse effects of noise. Noise can affect humans. Noise can also affect wildlife. Noise can also affect marine life, and it can also affect plants. So we concentrate on the adverse effects of noise on humans. The adverse effects of noise can be classified into auditory effects and non-auditory effects. Auditory effects are well known. The auditory effects of noise, they include deafness, and this is a proved fact now, and it also includes tinnitus. Many people are having tinnitus, cause is unknown, but they may be living in the noisy areas. Now, the non-auditory effects of known. This is not known to many of us. Increased heart rate, increased blood pressure, and all these are documented that people living in noisy areas, they are having increased blood pressure as compared to the control subjects.
effect on many pituitary hormones. There are more incidences of ischemic heart disease in people living in noisy areas. There's interference with performance and efficiency. There is interference with communication. Headache is common in people living in noisy areas. Fatigue is another factor. Giddiness is also observed. Nausea is also not that rare. Increased incidence of accidents in the noisy areas. You do not listen to the horns and other things. Vasoconstriction has been reported. Increased circulatory level of stress hormones. Now, there are effects on pregnancy also, documented effects. Increased chances of abortion, abnormal labor, low birth weight, pregnancy-induced hypertension. Increased intracranial pressure has been observed. There is increased respiration rate, increased sweating, interference with sleep, visual disturbance, narrowing of pupil, altered color perception, reduced night vision. There are effects on child physical development, effects on cognitive development of children, annoyance, and maybe many other effects. Effects of noise are not only on the human beings. The noise also affects the wildlife, marine life, material, and plants. A few examples: effects on wildlife. The noise damages to the hearing of the wildlife animals also. And when their hearing is damaged, it can reduce the chances of their survival. And it has been observed in the kangaroo rats. Physiological responses are altered. There is hormone imbalance and there is chronic stress in the animals, which is detected with the help of increased level of stress hormones. Behavioral response is affected. The animals, they show panic and escape behavior. शोर सुन के बगैर किसी वजह के वो इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं. The response results in decrease in food intake. When there is decrease in food intake, there is loss of energy and there is abandonment of offspring and they may cause injury. और जो एनिमल्स जंगल से ला के शहरों में रख दिए जाते हैं, उनकी लॉस ऑफ एनर्जी और डिक्रीज इन फूड इनटेक की एक वजह ये भी डिस्कवर की गई है. There are effects on marine life. There is change in delicate balance in predator or prey detection and avoidance. जिन साहिलों पे शोर ज्यादा होता है वहाँ पे ये आसानी से शिकार हो जाते हैं. Interference in use of sound in communication, navigation, and reproduction. And it has been observed that whales and dolphins, they may die. They are this condition called bends. They may have severe pains, and we have seen in news that sometimes these large size fish, they beach themselves. And one of the reason is when they are exposed to the noise, they may beach themselves. There are effects on the plants. The production capacity or growth of the plant is affected due to high level noise. There may be damage to the material. The building and material may get damaged by exposure to infrasonic or ultrasonic waves, and even they may get collapsed. Now next is what is the mechanism behind these all health hazards of noise? Well, it is not known exactly till now that what is the exact mechanism. However, many facts are known. There is activation of neuroendocrine system. This is a documented fact that there are increased urinary metabolites of cortisol, dopamine, epinephrine, and norepinephrine, and all these are the stress hormones. There is increase in the peripheral vascular resistance, which may lead to increased blood pressure, and these mechanisms are mostly said to be the sympathetically mediated.
Now, as we define the environmental physiology, we not only discuss the hazard, but we also have to discuss the solutions for the control of noise. How we control the noise. Now, in the world, there are many organizations which are solely responsible to control the noise. For example, there is the United Kingdom Professional Body for Acoustic. There is International Institute of Noise Control, and these are the links you can check by yourself. There is Pakistan Environmental Protection Agency, and this is the link which you can also go through, and I have taken some material from that also. So recommendations, we have to make acts, laws. There is United States Noise Control Act in 1972, this act came. There's United States Environmental Protection Agency, EPA. There are noise control ordinances in US and Europe. There is Pakistan Environmental Protection Act 1997, and there is Khyber Pakhtunkhwa Environmental Protection Act 2014. Now, to control the noise, many terminologies are used, like acoustic quieting, acoustic engineering, environmental health officer, environmental scientist, noise control engineer. There are quiet programs and initiatives. There are audio engineers, and there is now noise attenuation construction. So in order to control the noise, we may control at 3 different points. We may have to control the noise at source. We have to control the transmission of noise if we cannot control the production. And if we cannot control both the source of noise and transmission, then we have to protect the exposed person. Now, to control the noise at source, जितना शोर कम हो सके उतना प्रोड्यूस किया जाए. Each vehicle should have regular periodic inspection. Faulty silencers should be removed. Pressure horns should be avoided. There should be limited use of car horns during peak traffic hours. We have to control the traffic jams. There should be noise control in factories and industries. Use one appliance at a time at your house. Do not use all these together at one time. Turn down the volumes of your TVs and radios. Use the minimum volume of your phones. Avoid light cries, very light cries for children. You must regularly lubricate and service your vehicles, and there should be rational use of instruments. So you control the noise at the source. Now, how to control the transmission? Now, many buildings, they have this. There are sound absorbing materials that you can use. Implanting trees and bushes around the sound generating sources helps to reduce the level of the sound. Now, this is an example of a highway in Australia. They are making static noise barriers so that limited noise goes out of this road. Now, if you cannot control the both, you cannot control the source, you cannot control the transmission, then you protect the exposed persons. Then that is, you use the earplugs, and maximum exposure should be 85 decibels. The people working in noisy areas like traffic police and working in the factories, they should be regularly rotated to the non-noisy areas. There should be regular measurements of noise levels, just like we measure air pollution. Education of the public. Now, कितना शोर हमें बर्दाश्त करना चाहिए? What is the maximum allowable exposure to noise? So these were the 1981 recommendations. 1981 में कहते थे कि 90 से कम कोई शोर नहीं है, आप जितना मर्जी बैठे रहें. 90 डेसिबल को मैक्सिमम कहा था कि 8 आवर्स, फिर जो ज्यादा होता है 105 decibels few minutes and 110 decibels very few minutes. Now the recommendations were changed in 2019 when the more and more
health hazards of noise were known. They say that in the 80 decibels, you should not sit more than 25 hours. In 85 decibels, you should not sit more than 8 hours. This is continuous sitting. Now 90 hours has been reduced from 8 to 2 hours. 95 decibels has been reduced to few minutes only. So the recommendations are being changed at how much we should be exposed to the noise. Now, the noise, any sound, whether pleasant or unpleasant. I repeat, whether pleasant or unpleasant, above 85 decibels is to be considered as noise. So we have to know what is the noise level of everyday activities and different vehicles. On this side, sound pressure level in decibels is given. This is the actual sound pressure, which this pressure is put against the eardrum of our ears. Now you see the rustling leaves, they create 40 decibels. Rainfall may be 50 decibels. Conversation may be 60 decibels. Average traffic may be 85 decibels. Chainsaw 100 decibels. रॉक कंसर्ट वेरी डेंजरस, लोग घंटे घंटे बैठते हैं, 110 डेसिबल, कुछ मिनट से ज्यादा अलाउड नहीं है, एंड दैट्स 130 डेसिबल. ये एक मिनट से भी ज्यादा हो तो आपकी हियरिंग डैमेज कर सकता है. प्राइवेट ऑफिस में देखा गया 30 to 50 डेसिबल, जनरल ऑफिस में देखा गया 60 to 65 डेसिबल, स्पीच में भी 60 to 70 डेसिबल, एवरेज ट्रैफिक में भी 70 to 90 डेसिबल, raised voice shouting may be 90 decibels, और 120 से ज्यादा painful to ears है, और 125-30 से ज्यादा it can damage the eardrum also. This was a few years back. ये मैंने किसी लिटरेचर से लिया था. पिशावर में एक दफा मेजर किया गया. मोटर कार्स न्यूट्रल गियर में 64 डेसिबल, अराउंड दिस केस 59 डेसिबल, ऑटो रिक्शास 98 डेसिबल, or pressure horns 104 decibels. Thank you very much. I would be pleased if you have got some questions, and we can get some suggestions also, some more recommendations also. Thank you very much for your patient listening. Thank you very much, Professor Rashid. Really, it was very comprehensive and informative webinar lectures. Your lectures, I think, کہ اس شور نے نا ہمیں کافی ذہنی طور پہ متاثر کر رکھا ہے. سب سے بڑا جو متاثر اس شور کا ہے، اس نائس انوائرمنٹل ہیزرڈ کا ہے. تو ہمارے درمیان ڈاکٹر انم نجم موجود ہیں. ڈاکٹر انم نجم، آپ سے گزارش تھی کہ آپ یہ بتائیں کہ اس انوائرمنٹل ہیزرڈس کے جہاں پہ دوسرے ایفیکٹس ہیں، اس شور میں ہمارے ذہنی کیفیت کے اوپر کیا اثر ڈالا ہے؟ تھینک یو سر. اچھا سر، جو نوائز کا سائیکولوجیکل افیکٹس ہیں، مینٹل ہیلتھ افیکٹس، یہ اب نیو ریسرچ سے جو پتہ چل رہا ہے، یہ بہت وائڈ رینج آف سمپٹمس پروڈیوس کر رہا ہے، جس میں ایک جو بیسک چیز جو ہم سب کو پتہ ہے کہ سلیپ ڈسٹربنس ہے، کہ ہمیں سونے کے لیے اور پیسفل سلیپ کے لیے جو ہے ایک پیسفل انوائرمنٹ چاہیے ہوتا ہے، اس میں نوائز نہ ہو، اور نوائز ہوگا تو آپ کی سلیپ ڈسٹربنس ہے. اگر سلیپ ڈسٹربنس ہے تو اس کی وجہ سے ہمارے سارے باڈی کی جو ہارمون پروڈکشن ہے، وہ سارا جو ہمارا سرکیڈین ریدم ہے وہ افیکٹ ہونے لگتا ہے. اس کے ساتھ پھر موڈ چینجز آ جاتے ہیں. پھر دیکھا گیا کہ یہ لوگ زیادہ جو لوگ نوائزی ایریاز میں رہتے ہیں وہ زیادہ ایموشنلی انسٹیبل، آرگومنٹیٹیو، ایون سیکشل امپورٹینس بھی دیکھی گئی ہے اس کے ساتھ، نوائز کے ساتھ ریلیٹڈ، اور وہ دیٹس ڈیو ٹو سائیکولوجیکل ریزنس. اینڈ دین جیسے سر نے مینشن کیا کہ اسٹریس ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں، کورٹیسول، ایڈرینلین. تو اسٹریس ہارمونز ریلیز ہونے کی وجہ سے باڈی اور مائنڈ جو ہے اسٹیٹ آف انگزائٹی میں رہنے لگتا ہے. انگزائٹی ڈس آرڈرز جو ہیں ان کا انسیڈنس بڑھ جاتا ہے. اسی طرح سے ایک سینس آف ہیلپ لیسنس ہوتی ہے کہ آئی ہیو نو کنٹرول اوور دس نوائز. فار ایگزامپل ٹریفک سے ہے، یا کسی کا گھر اگر کسی ٹرین کے ٹریک کے قریب ہے، یا کوئی اور ایسی جگہ ہے، تو وہ جو ہیلپ لیسنس کی فیلنگ ہے کہ آئی کین ناٹ کنٹرول دس نوائز، میں اس سے جتنا بھی اریٹیٹ ہو رہا ہوں میں اس کو نہیں کنٹرول کر سکتا، تو یہ ہیلپ لیسنس ڈپریشن کی طرف لے کر جاتی ہے. تو اس سے ڈپریسو النس کے جو چانسز ہیں وہ انکریز ہو جاتے ہیں.
پھر کانسنٹریشن آپ کی امپیکٹ اس پہ بھی ہوتا ہے. پھر جو ریسرچ کچھ بچوں پہ دیکھی گئی کہ جو کچھ اسکولس ایسے تھے جو کہ ٹرین ٹریکس کے قریب تھے, ان میں کچھ کلاس رومز ایسے تھے جو کہ جن میں آواز آتی تھی ٹرین کی, اور کچھ کلاس رومز بلڈنگ کی دوسری طرف تھے جہاں کی آواز نہیں آتی تھی. تو ان پہ جب کمپیریٹیو اسٹڈی کی گئی تو یہ دیکھا گیا کہ جو ریڈنگ ایبلٹی تھی بچوں کی, اس میں 1 سال کا 1 ایئر کا ڈفرنس آ رہا تھا. وہ بچے جو کہ اس نوائزی انوائرمنٹ میں پڑھتے تھے وہ 1 ایئر بیہائنڈ تھے ان بچوں سے جو کہ ایک پیسفل انوائرمنٹ کے اندر پڑھ رہے تھے. پھر اسی طرح سے کوگنیٹو ڈیولپمنٹ پر افیکٹس دیکھے گئے کہ کوگنیٹو ڈیولپمنٹ بچوں کی افیکٹ ہو رہی ہے اس کے ساتھ, جس میں سے کہ باقی چیزیں جو ہیں وہ جب آپ نوائزی انوائرمنٹ سے اس کو ہٹا دیتے تھے بچے کو, کچھ عرصے میں باقی کی چیزیں ریکور کر جاتی تھیں, کانسنٹریشن ریکور کر جاتی تھی, اٹینشن ریکور کر جاتی تھی, لرننگ کی ایبلٹی ریکور کر جاتی تھی. لیکن کچھ چیزیں ایسی تھیں جو کہ پرماننٹ ڈیمیج تھا. فار ایگزامپل جو اسپیچ پرسیپشن ہے بچوں کی, ان بچوں کی جو کہ نوائزی انوائرمنٹ میں رہے, ان بچوں کی اسپیچ پرسیپشن پرماننٹلی امپیئرڈ ہو گئی تھی ایز کمپیئر ٹو وہ بچے, کیونکہ ان کا مائنڈ جو ہے وہ کوپنگ کے لیے سیکھ لیتا ہے کہ ساؤنڈ کو اگنور کرنا. تو جب وہ ساؤنڈ کو اگنور کرنا سیکھ رہا ہوتا ہے تو اس میں بہت سی جو میننگ فل ساؤنڈس ہیں وہ ان کو بھی اگنور کر رہا ہوتا ہے. تو دیر از اے ملٹیپل افیکٹس, ایک بہت زیادہ ایک پوری دنیا ہے افیکٹس کی جو کہ نوائز کے ساتھ مینٹل ہیلتھ افیکٹس جو ہیں وہ ریلیٹڈ ہیں. جی سر. یہ بتائیں now I will request Dr. Umar Ali Khan before we start the session of the question and answer. Professor Umar Ali Khan, can you add something in the health hazard effects, physiological and other effects on the due to noise on our health? دیکھیے ڈاکٹر ملازم بہت بہت شکریہ آپ کا, ڈاکٹر سلما, ڈاکٹر راشد, all of you, I'm thankful to you for inviting me for the seminar first. دیکھیے ہم جب فزیولوجی کی بات کرتے ہیں نا تو the most physiological thing is قرآن. اور قرآن کی سورہ روم 30ویں سورت ہے اور اس کی 30th آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو دنیا کو پیدا کی فطرت پر پیدا کی ہے اور اس کو چینج نہ کرو. And once you change that, تو ایکو سسٹم جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. اور اس ایکو سسٹم کے جیسے ڈاکٹر راشد نے بتایا کہ ایون اینیملز کے اوپر فرق پڑتا ہے, اور جیسے آپ وائلڈ لائف کے اوپر چینج آتی ہے تو ان کے اندر جو چینجز رونما ہوتی ہیں ان کو آپ جب when you use them as a as an edible کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو وہ ایفیکٹس آپ کے اوپر بھی آتے ہیں. تو it is a vicious circle that goes on when you increase sound levels or any type of pollution. But sound pollution is basically جو یہ اس کے ایفیکٹس آ رہے ہیں اس کے اوپر ہمارے معاشرے کے اوپر کہ لوگوں میں جو ہے قوت برداشت ختم ہوتی جا رہی ہے. اور جیسے ڈاکٹر انم بتا رہی تھی کہ لوگ جھگڑنے لگ جاتے ہیں. ایک میں چھوٹا سا آپ کو ایک ملتان کا واقعہ بتاتا ہوں کہ اسٹوڈنٹ تھا ہمارے میڈیکل کالج میں نشتر میں, وہ بہت اونچا بولتا تھا, سب سے لڑتا تھا. ایک دن وہ 3rd ایئر میں ایک پروفیسر کے پاس گیا تو انہوں نے اس کو بٹھا لیا, وہ رونے لگ گیا. اس نے کہا یو آر دی فرسٹ ون جس نے مجھے بیٹھنے کو کہا ہے. تو پتہ لگا کہ ملتان میں پاور لوم سے کھڈیاں ہیں, ان کا ساؤنڈ بہت ہوتا ہے اور 2 مرلے کے مکان ہوتے ہیں. تو اس ساؤنڈ کی وجہ سے وہ سائیکولوجی اتنا اونچا بولتا تھا, لگتا تھا لڑ رہا ہے. ان پروفیسر صاحب نے سے کنسلٹ کیا اور اس کے بعد وہ بندہ آرمی میں بڑے ہائی لیول پہ میجر جنرل جا کے ریٹائر ہوا. You see, this was the psychological effect which I have observed myself. So this is my 2 cents, please. Thank you so much. واقعی آپ نے بالکل نہ صرف اس پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے فطرت کے مطابق پیدا کیا اور انسان کو بھی اس کے اہم فطرت پیدا کیا. عمر اور خوبصورت فکرہ کا آپ نے ہمیں چاہیے, لیکن انفارچونیٹلی اس ترقی کے دور میں جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ اس انڈسٹریلائزیشن اور دوسرے اس کے مطابق جو ہے وہ ہمارے شعور کے نظام کو. میں آپ کی طرف آتا ہوں. سب سے پہلے راشد یہ پوچھوں گا, پروفیسر راشد, کہ یہ بتائیں کہ پہلا سوال تو میں یہ کرتا ہوں کہ ہم اس انڈسٹریلائزیشن کے شور کو تو کم نہیں کر سکتے, لیکن بتائیں کہ ہم اس کو بچیں کیسے. تھینک یو سر. پروفیسر راشد جی, اس میں میرے پریزنٹیشن میں تھوڑا سا ایسا ذکر تھا. ایک تو اس کو کم بھی کر سکتے ہیں, اس میں اب آئے ہیں ایسے وہ انڈسٹری جو شور زیادہ کرتی ہیں جس میں گاڑی میں سلنسر ہے, ایسے سسٹم آئے ہیں. اگر
अगर बदकिस्मती से उसको कोई मॉनिटर करने वाला हो। अब ऐसे लाज बन रहे हैं कि आप फैक्ट्रीज में ये चीज़ें लगाएंगे। और दूसरा वो चीज़ है कि जब जहाँ पे आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते वहाँ पे आप ईयर प्लग्स, हेडफोन, इस किस्म की चीज़ें यूज़ करें और स्टाफ को रोटेट करते रहें। हर नॉइस की एक लिमिट है, और एक हर फैक्ट्री, इंडस्ट्रियल एरिया, ट्रैफिक, सड़कों पर नॉइस लेवल मीटर ये अब इतनी महंगी चीज़ नहीं रही। ये नॉइस लेवल मीटर बहुत आसानी से खरीदा जा सकता है, और नॉइस मेजर करते रहें। अगर उस एरिया में 85-90 से ज़्यादा है तो स्टाफ को रोटेट करते रहें। दैट इज द बेस्ट पॉलिसी। उनको 2-4 घंटे बाद वहाँ से निकाल दें। You are right. Not only we should be requested to our government and all the institution responsibility up there to control this environment. जी हमारे कैसर भाई आपका हाथ खड़ा है, आई एम रिस्पेक्टेबल टू मी, क्योंकि आप ENT से भी ताल्लुक रखते हैं कि इसका जो शोर का जो सिलसिला है ये कानों से भी ताल्लुक रखता है। तो मैं आपके चाहूंगा कि ये इसका क्या इफेक्ट पड़ता है कुव्वत समात के ऊपर। साजिद कैसर सजाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुलाजिम साहब। अपना चेहरा दिखाएं, अपना चेहरा तो दिखाएं ना। मैं चेहरा ओके मैं कर लेता हूँ। बिल्कुल ठीक है। राइट। अब आप जी। अच्छा, मैं हमारा जो वो है जो आपने कहा कि कान से ही शोर जाता है, मेरे ख्याल में सिर्फ कान से ही शोर जाता है और जो पूरी बॉडी को डिस्टर्ब करता है सिर्फ ये कान ही है जो कि जब साउंड को परसीव करता है उसके बाद हम जो है वो पागल हो जाते हैं या इरिटेबल हो जाते हैं। तो ये सारा सिस्टम ही इसी चीज का है। अच्छा, चूंकि मैं जैसे कि आपने बताया कि मैं ENT के मरीज देखता हूँ और ये रोजाना हम इसमें देखते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं और कि इसको रोका जा सकता है, प्रिवेंशन किया जा सकता है। हमने जब ये प्रोग्राम शुरू किया था वेबिनार, तो हमने ये हमारा आइडिया भी ये था कि हम कुछ चीजें ऐसी बात हो जाती है जिससे हम हुकूमत को हम मशवरा दे सकते हैं कि आज हमारे वेबिनार में ये बातें हुई हैं जिसमें यूनानिमसली ये डिसाइड किया गया है, हम उसको आगे कर सकते हैं। मैं पर्सनली तौर से जब मैं कराची का जनरल सेक्रेटरी था तो मैंने बहुत सी चीजें, बहुत एक्टिविटी की, क्योंकि शोर का मसला बहुत ज्यादा था, खासकर कराची में और कराची से बाहर जो था वो रिक्शा 2 स्ट्रोक रिक्शाज, आपको अगर याद हो तो बहुत ज्यादा पट पट करते हुए कहीं पे थोड़ी देर के लिए अगर पैसेंजर को लाके खड़ा करता था तो वो 2 मिनट 5 मिनट के लिए बहुत ज्यादा परेशानी होती थी। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमने इस प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के वो 2 स्ट्रोक रिक्शाज वो खत्म कराए। अभी शायद किसी जगह होता हो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऑलमोस्ट कराची में तो खत्म हो गया। अब वो CNG लगाते हैं या 2 स्ट्रोक इंजन है जिसमें CNG लगती है। तो ये एक बहुत अच्छी बात हुई है। इसमें हमें ये देखना होगा कि इसमें जो हमारे माशरे में क्या हो रहा है। माशरे में सबसे ज्यादा ये है कि जो कॉन्सर्ट्स होते हैं, जो म्यूजिकल प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें हमारे जो यंग जनरेशन है वो जाकर आगे बैठते हैं या आगे खड़े होते हैं इन फ्रंट ऑफ द स्पीकर। अब स्पीकर से राशिद साहब को मैं मुबारकबाद दूंगा, अनम और उमर खान साहब ने बहुत अच्छी बातें की, सबने, खासकर राशिद साहब तो हमेशा ऑलवेज कंट्रीब्यूट करते हैं बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन। तो उन्होंने मैं समझता हूँ सारी बातें बता दी हैं। तो मैं थोड़ी सी जो क्लिनिकल बातें हैं वो बता दूं कि जो लोग खड़े होते हैं वहां पे या बैठते हैं कि जी हम सामने बैठेंगे और स्टेज से सामने, स्टेज के करीब बैठेंगे। अब अगर आप नोट करें, अगर हम में से कोई गया है म्यूजिकल प्रोग्राम में या कोई ऐसी शोर वाली जगह पे या कोई स्पीच वाली जगह पे जहां लोग चीख के बात कर रहे हैं स्पीकर से, तो टेम्पररी तौर पे सेंसरी न्यूरल लॉस हो जाता है टेम्पररी तौर पे। तो जब आप बाहर आते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि शायद आप कम सुन रहे हैं, लेकिन कुदरत का निजाम ऐसा है कि वो ग्रेजुअली एक्लेमेटाइज करके आपको दोबारा सेटल कर देता है। तो लेकिन अगर आप ये काम बार बार करते रहें, रोजाना म्यूजिकल प्रोग्राम में आप जाते हैं किसी वजह से, चाहे आप साउंड इंजीनियर हैं, चाहे आप स्पीकर वाले हैं, उसको अरेंज करते हैं, वहां सामने बैठते हैं, तो आपको डेफिनेटली सेंसरी न्यूरल लॉस हो जाता है। तो एक तो ये है। दूसरा, हमने
کراچی میں یہ جو ٹریفک کی بات کی نا راشد صاحب نے، تو یہ فیکٹ ہے. میں نے جتنے بھی ٹریفک پولیس ہیں، یہ جو روڈ پہ بیچارے کھڑے ہوتے ہیں، ایک تو گرمی ہوتی ہے، دوسری ان کو کا بیچ میں کھڑے ہوتے ہیں ہر طرح کے کنٹرول کرنے کے لیے. تو میں نے ان میں سے بہت سارے لوگوں کو بلا کر ان کا آڈیوگرام کرایا، تو پتا چلا کہ میجورٹی جو ٹریفک پولیس ہیں جو یہ کنٹرول کرتے ہیں، وہ ان کی بات جو تھی وہ کافی کم تھی. تو یہ 2-3 چیزیں ہمیں حکومت کو میں چاہوں گا کہ اپنا ہمیں دے دیں اپنا پریزنٹیشن، اور یا ہم ایک یونینیمسلی ایک پیپر بنا لیں کہ یہ ریکمنڈیشن ہے فرام آور ٹوڈیز ویبینار، کہ حکومت کو وہ ڈائریکٹلی ہیلتھ منسٹری میں بھیجوں گا. قادر پٹیل سے میں جانتا ہوں ان کو بائی ہینڈ بھی دیا جا سکتا ہے، ان کو بھیجا جا سکتا ہے. ایٹ لیسٹ ہم اس سیمینار سے کچھ کر سکتے ہیں، باقی کر کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور پھر ہم اس کو ایک پریس ریلیز کے شکل میں بھی جاری کریں گے، لوگوں کو بتائیں گے، ینگ جنریشن کو بتائیں گے کہ وہ جو واک مین سنتے ہیں، اس سے سب سے بڑا پرابلم ہمارے پاس کیسز آتے ہیں. پہلے اس میں پروفیسر راشد نے بتایا کہ ابھی جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، لوگ اپنے گھروں میں چھوٹے چھوٹے اپارٹمنٹ ہیں، رات کو اگر لائٹ چلی جاتی ہے تو کسی نے کوئی چھوٹا سا جنریٹر لگاتے ہیں. جی تو ساؤنڈ، جی، اور اس کا ساؤنڈ پورے اپارٹمنٹ کے اندر لوگوں کو سونے نہیں. تو ایک تو ہیئرنگ امپیئرمنٹ، پلس اس میں جو چڑچڑا پن، اور باقی جتنی بیماریوں کی بات کی ہے، انم نے بھی بہت اچھا بتایا ہے کہ جو پرابلم اس کے ذریعے ہوتا ہے. اچھا، یہ لوگوں کو معلوم نہیں، ہم بیٹھے ہیں کسی شور کی جگہ پہ. ہاں ایگزیکٹلی. پھر دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ابھی راشد صاحب کہہ رہے تھے کہ قانون بنا ہوا ہے راشد صاحب کہ فیکٹری کے اندر، کہ ایک پوری میں نے کچھ فیکٹریز کی ساری ان کی منگوائی ہے، پیپرز منگوا کے دیکھے، اس میں لکھا ہوا ایئر پلگ لگانا ہے، اس کے بغیر اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اویئرنیس کریٹ کرنی چاہیے اور پر حکومت بھی کو اس کو لکھ کے دینا امپلیمنٹیشن نہیں ہے. چاہیے. تھینک یو سجاد. نو ڈاکٹر سلما کوندی، آپ کا ہاتھ کھڑا ہے. پروفیسر سلما کوندی، جی آپ نے سوال بھی کیا اس کے اوپر. پروفیسر سلما کوندی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم ایوری ون. وعلیکم. ہاں جی، تھوڑا سا میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں. پروفیسر عمر علی کی بات لے کے آگے چلوں گی. دیکھیں ہمارا دین کتنا پیارا ہے. ہمارے دین میں کہا گیا ہے سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے. دیٹ مینز وہ بہت اونچا بولتا ہے اور بے تکا سا بول رہا ہوتا ہے. اچھا جی، بالکل. اور دوسری بات یہ ہے کہ قیامت میں سور پھونکا جائے گا. obviously وہ ہمارے کانوں کے ذریعے آواز جائے گی، آواز تیز ہوتی جائے گی. اس آواز نے ہمیں اتنا ڈیمیج کر دینا ہے اس وقت کی جو بھی انسانیت ہوگی کہ وہ مر جائے گی. That means noise pollution can cause death as well. تو یہ بہت ہی ڈینجرس چیز ہے. تو اب یہ ہے کہ اس چیز کو مفل کرنا ہے دین میں. پھر ہماری پیاری باتیں لگائیں. ڈاکٹر راشد نے کہا ہے کہ آپ پلانٹیشن کریں ایسی جگہوں کے ارد گرد. ہم میں سے ہر ایک اگر یہ تہیا کرے کہ اگر ایوریج انسان کی لائف سپین 70 ایئرز، ہمیں 70 درخت کم از کم لگانے چاہیے. اپنے بچوں سے بھی لگوائیں، اس نیوٹن آ جائے گی. اب کیسر سجاد بھائی کی بات مجھے بہت اچھی لگی. حکومت کو ہم نے بھیجنا ہے. اگر ہم یہ آج ڈیسائیڈ کر لیں کہ جی انسٹیڈ آف جنریٹرز ہم اگر سولر پینلز لگا لیں، تو ایک تو ہمارا بہت پیسہ بچ جائے گا، دوسرا اس شور سے ہمیں نجات مل جائے گی. جو یہاں ویلڈرز کام کرتے ہیں کمرشل ایریاز میں، جی بیچ بازار میں بیٹھے ہوتے ہیں، گھروں کے ارد گرد انہوں نے دکانیں کھولی ہوئی ہیں. ایسی جو نوائز پولیوشن کے سورسز ہیں یا ایکشنز ہونی چاہیے کہ جی کم از کم یہ سال دیتے ہیں. جی بالکل. ینگ کراؤڈ، اس کے اوپر پینلٹی ہونی چاہیے.
दूसरा, हम चूंकि मेडिकल टीचर्स हैं, हमारे हाथ से हजारों बच्चे निकलते हैं, उन्हीं को हम एजुकेट करें कि बेटा आहिस्ता बोला करो, टॉक पोलाइटली, टॉक इन अ लो वॉल्यूम, तो और वो कल्चर औरों के घरों तक जाए, ये बात फैलती जाए, तो दुनिया बहुत अच्छी हो जाएगी और हमारे कान पुरसुकून हो जाएंगे. It was a pleasure listening to this talk and PMA must play its role. हम हुकूमत को हम ये रिकमेंडेशन जरूर भेजनी चाहिए. थैंक यू. जी प्रोफेसर अयूब, आपने कुछ कहना चाहेंगे? प्रोफेसर अयूब. सर, मेरा काफी वक्त सड़क पे गुजरता है गाड़ी चलाते हुए, और मुझे शिद्दत से एहसास होता है जी सर कि जो हमारे बच्चे सलेंसर निकाल के मोटरसाइकिल चलाते हैं, वन व्हील छोड़े और चीज है, सलेंसर निकाल के वो चलाते हैं, गाड़ियों के सिलेंसर निकाले होते हैं, पीछे बड़े बड़े सिलेंसर लगाए होते हैं जो मैग्नीफाई कर रहे होते हैं साउंड को, इतने जोर से उन्होंने टेप रिकॉर्ड चलाया होता है स्पीकर से. मैं हैरान हूँ कि वो उस गाड़ी के अंदर बैठ के वो सफर कैसे करते हैं. और जो लारी अड्डों के करीब जो लोग रहते हैं, जिनके घर हैं जहाँ हर वक्त हॉर्न की और इंजनों की आवाज आती है, इसमें उनकी जिंदगी कितनी मुश्किल होती होगी. एज अ ह्यूमन बीइंग जब मैं एक्सपोज होता हूँ, उस सड़क पे जाता हूँ जहाँ पे साउंड पोल्यूशन, हॉर्न और ये सलेंसर वगैरह की आवाजें, ऑब्वियसली उस वक्त टेंशन ज्यादा हो जाती है, ड्राइविंग एटीट्यूड तब्दील हो जाता है, फिर खामखा से किसी को ओवरटेक करने को, खामखा से किसी को रास्ता न देने को, खामखा से किसी को कट मारने को दिल करता है ड्राइवर का. सो दिस इज आल्सो अ डेंजरस थिंग, जो कि हमारे खास तौर पे हमारे ड्राइवर तबके में और उन लोगों पे जो सड़क पे रहते हैं या बाजारों में रहते हैं, उनकी साइकी और उनकी जो मेंटल एटीट्यूड्स हैं वो तब्दील हो रहे हैं. इसके मुतालिक करना चाहिए. मैं सवाल करता हूँ, हम सब में से हमारे किसी की गाड़ी का सिलेंसर खराब नहीं होगा, लेकिन हमारे बच्चों के मोटरसाइकिल और उनकी गाड़ी के सिलेंसर खराब नहीं. जी डॉक्टर अयूब, आपके कुछ लोगों के गलों में भी सिलेंसर लगे होते हैं, जो मुझे रात को उठ के आना पड़ता है, हॉस्टल से बाहर निकलना पड़ता है कि ये क्या हो रहा है. वेरी थैंक यू सो मच सर. लेट्स टॉक. अच्छा, इसके बाद ये है कि डॉक्टर इकबाल हमारे यहाँ मौजूद है. उन्होंने लिखा है कि इसके साथ ओटाइटिस मीडिया होता है, वाकई होता है. मैं डॉक्टर सज्जाद ने दोबारा हाथ खड़ा किया है. कंक्लूडिंग रिमार्क से पहले डॉक्टर कैसर सज्जाद जी, कैसर सज्जाद, डॉक्टर कैसर सज्जाद. जी सर, मैंने हाथ नहीं खड़ा किया है. अच्छा, ओके. पता नहीं, अच्छा, पहले से ये काजी साहब, डॉक्टर काजी साहब आप मौजूद हैं. कैन यू ऐड समथिंग डॉक्टर काजी साहब? जी काजी साहब, माशाल्लाह खूबसूरत चेहरा, खूबसूरत बाल आपके और सोबर किस्म की आवाज आपकी. जी, आपके सुनने के लिए मुंतजर हैं. Sir, thank you very much. It was wonderful presentation by Dr. Rashid Mahmood and मैडम सलमा कुंडी और कैसर सज्जाद ने बहुत अच्छी बातें इसमें ऐड की. मैं सिर्फ उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए कहूँगा कि उनके जो सजेशंस हैं कि साउंड प्रोड्यूसिंग प्रोफेशनल जो है उनकी डेजिग्नेटेड एरियाज हो जाने चाहिए, जनरेटर्स का इस्तेमाल कम से कम होना चाहिए और सोलर पैनल्स की तरफ हमें जाना चाहिए. तीसरी बात जो है वो बहुत अहम है कि हमें प्लांटेशन करना चाहिए और हम ये जो खूबसूरत लॉन के बजाय अगर शेडी ट्रीज और बड़े दरख्त लगाएं तो वो ज्यादा बेहतर साउंड एब्जॉर्बेंट्स होते हैं. तो एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन बाय राशिद महमूद. डॉक्टर काजी, और आपको बता दूं कि आप जा रहे हैं अमेरिका, और कल का जवाब रह गया था कि आपको पीसीआर नहीं करवाना पड़ेगा अमेरिका जाने के लिए. और एनीबॉडी वांट कल का आपने सवाल पूछा था, कल का सवाल पूछा था कि कोविड में अब पीसीआर नहीं होता और आप आराम से दुनिया के हर कोने में जा सकते हैं वैक्सीनेशन से, और बूस्टर का सर्टिफिकेट भी नहीं होता इकट्ठा. एनीबॉडी वांट टू आस्क बिफोर दैट? डॉक्टर राशिद, कैन यू कंक्लूड, गिव योर फाइनल कमेंट्स? Yes, sir. Thank you very much, and thanks to all for their interest. डॉक्टर आनम ने, प्रोफेसर वली खान ने, डॉक्टर कैसर सज्जाद, प्रोफेसर सलमा कुंडी, प्रोफेसर अयूब,
डॉक्टर वासे काजी, इन सब ने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया, चैट बॉक्स में भी क्वेश्चन थे। और आई टोटली एग्री विद डॉक्टर कैसर को हम एक बना के एक हैंड आउट से बना के प्रेस रिलीज जी जी, गवर्नमेंट को दे ये देंगे। बिल्कुल अच्छी सजेशन है। हम विल मिलके लिखेंगे राइट एक अप अच्छे से एंड विल नोट। पब्लिश इन पल्स, इन पब्लिक Yes. पल्स में भी पल्स करते हैं, और उसके बाद हम उसको वो भी करते हैं, इसको राइट अप डॉक्टर आप भी कर दें, डॉक्टर नजम आप कर दें, और इसके बाद अनम नजम भी राइट अप करती है, आप भी करते हैं इसको, जो कुछ आपने कहा, और इसको हम पल्स में पब्लिश करते हैं। एक सर मेरी एक जी 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 सर, सर मेरी एक सजेशन है मुलाजिम साहब कि सर डॉक्टर राशिद प्लीज, जो आपने बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन इसकी, जो चीजें कोई जो कंसाइज 8-10 पॉइंट जो होते हैं, जो कि हम रिकमेंड करें, लिख के हम सर्कुलेट आपस में 2-3 लोगों में कमेंट बना के मैं हम आपको फिर कर दूंगा, इसको हम पब्लिश करेंगे एक रिक्वेस्ट की सूरत में। जी एक हाथ खड़ा हुआ है, हम जी कोशिश करेंगे, और इसको फिर हम जी जी बिल्कुल। डॉक्टर कैसर ज़ेबा अहमद आप सवाल करें, क्योंकि हम कंक्लूड करने लगे। डॉक्टर ज़ेबा, और उसके बाद में इकबाल साहब को कहूँगा। डॉक्टर ज़ेबा अहमद, डॉक्टर ज़ेबा आप अनम्यूट करें अपने आप को। डॉक्टर ज़ेबा, चलें इकबाल साहब आप कर लें इसी हिसाब से। इकबाल साहब अनम्यूट हैं, आप कर दें। Assalamu alaikum, to all my dear seniors, and thank you so much, Dr. Rashid Saab, to invite us and being a patient and the best special my special thanks to Rashid Mahmood Saab and Sir Mulzim Bukhari Saab. Thank you so much. मुलाजिम हुसैन बुखारी, मुलाजिम हुसैन बुखारी। सर मुल्जिम कर दिया है, ऐसा नहीं करे यार। मुलाजिम बुखारी, sorry sir, I am specially doing my job here in a prep-free area. I am looking here, there is no too much noise, but the symptoms and that's given by sir are mostly ENT patient here. Is there any without noise? And we are seeing the patient from the periphery area. Main the tinnitus, dizziness, these are always and mostly in periphery area also. I think they are not using generator etc. They are not mostly noises like the average given by Professor Rashid Saab. Thank you so much. Dr. Zeba, you want to ask the question? Last question. Dr. Zeba. Dr. Zeba, I have unmuted you, Dr. Zeba. Okay, Professor Salma Kundi. Dr. Rashid से जवाब ले उसके बाद। जी जी, Dr. Zeba, you can ask now. I have unmuted you. सर मैं प्रोफेसर ज़ेबा अहमद हूँ, मैं डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंसेज में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ। काइंडली सर ये आपकी चैट में मैं देख रही थी कि किसी ने पूछा कि ओटाइटिस मीडिया हो सकता है, तो सर ये नॉइस पोल्यूशन बेसिकली इनर ईयर को, कॉक्लिया को इन्वॉल्व करता है, वहां जाके ये कान की सुनाई पे इफेक्ट डालता है, मिड लेयर पे नहीं करता। लेकिन अगर मिड लेयर की कोई डिजीज पहले से मौजूद है तो मसला हो सकता है, अदरवाइज नॉइस पोल्यूशन का जो असर है वो इनर ईयर पे, कॉक्लिया वाले पार्ट पे होता है। तो ओटाइटिस मीडिया का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ ये हियरिंग इम्पेयरमेंट करता है, उसके जो अंदर बोलने वाले सेंसर ऑर्गन है, ऑर्गन ऑफ कॉर्टा है इनर ईयर में, वहां जाके इसको नुकसान पहुंचाता है। अदरवाइज वेस्टिबुलर बैलेंस के सिस्टम को भी कुछ नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ कॉक्लिया को इन्वॉल्व करता है। तो और कैसर भाई ने बहुत अच्छी बात की कि हमें इसके नॉइस पोल्यूशन से रिलेटेड जितने भी नुकसानात हैं उन सबको गवर्नमेंट को देना चाहिए, और इसमें प्रिवेंटिव मेजर जैसे कि बच्चे आजकल फ्री हैंड यूज करते हैं यूनिवर्सिटीज में, इस पे भी एक पाबंदी लगानी चाहिए ताकि ये लो हियरिंग लो नॉइस जो बहुत कम, कभी कभार ये होता है बहुत ही लंबे से प्रोलॉन्ग यूज पे बच्चे के ये हियरिंग इम्पेयरमेंट करता है। तो यहाँ यूनिवर्सिटी लेवल पे और ट्रैफिक पुलिस में, फैक्ट्रीज पे, प्रिवेंटिव साइड पे, और जो लोग बहुत ज्यादा एक्सपोज हो गए उन लोगों के लिए एक स्क्रीनिंग प्रोग्राम होना चाहिए ताकि पता चले कि उनको कितना नुकसान हो गया है अभी तक। तो ये सब चीजें Thank you, Dr. Zeba. Professor Salma Kundi now give your concluding remarks and vote of thanks. Thank you, Chief. Thank you, मुलाजिम साहब।
जी मुलाजिम जी साहब से कैसर भाई बोलिए। जी 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 सवाल जी ये डॉक्टर इकबाल साहब ने कि गांव के अंदर जो है वो फिर उनको मैं टेनाइटिस कुछ और बोल दूं डिजीनेस इस और ये सारी सिलसिले में, चीजें होती है। इकबाल साहब तो के लिए मैं मैं कुछ बोल दूं। आ, इकबाल साहब, मैंने गांव में ये ऑब्जर्व किया है जी जी कि बोले बोले हमारे गांव के लोग बहुत ऊंचा बोलते हैं, आपस में कम्युनिकेशन करते हुए भी उनका बोलने का स्टाइल ऐसा होता है कि वो एक दूसरे की समा खराशी कर रहे होते हैं। दूसरा, हर गांव में टीवी और रेडियो मौजूद है, उसका वॉल्यूम भी ये लोग बहुत ऊंचा रखते हैं। और गांव में ज्यादातर मोटर बाइक्स यूज होती हैं, गाड़ियां कम होती हैं, उससे भी मुझे लगता है इन्होंने साइलेंसर्स हटाए होते हैं, तो जरूर नॉइज पोल्यूशन हमारे गांव में एग्जिस्ट करती है, जिसकी वजह से Madam, tonight's I वगैरह will के मसले request a हो vote सकते of हैं। thanks to And here conclude we this webinar. Okay. We've had 1 hour here. I really want to thank everyone, especially Professor Rashid Saab, Professor Umar Ali Sahib, and Dr. Anam, who was also my student, and Professor Mulazim Sahab. आज आपके साथ वही काम हो गया, एक नुक्ते ने महरम से मुजरम बना दिया. So you कर are दिया not हमको। Mulzim, you are Mulazim Sahab. Thank you, Kaisar Bhai, thank you, Qazi Saab, and thank you all the participants. I really appreciate it. Recommendations PMA की तरफ से हुकूमत पाकिस्तान को जरूर जाएंगी कि किस तरह हम इस noise pollution को control करें. Allah bless you all. Have a nice day. Thank you. On behalf of PMA, Thank you so thank you. much. Thank you so Thank much. you very much. Thank you very madam. much. Thank you, Allah everybody. Hafiz. No doubt, today we were less than 20, but I think जो बातें हुई हैं ये हमारी काफी बेहतर उस तरीके से we will write up this editorial in the JPMA and write up these things to the aware this public awareness, क्योंकि ये pollution जो है हमें ना सिर्फ बहरा कर रही है बल्कि हमारे दूसरे कॉग्निटिव इफेक्ट के ऊपर और दूसरे फिजिकल हेल्थ के ऊपर भी इफेक्ट करती है। और आप ये देखें कि एक सिंपल सा हम बैठे होते हैं ना महफिलों में, अपने हम जो मोबाइल है उनको बजाय साइलेंट लगाने के ऐसी आवाज होती है तो देखें कितना चिड़चिड़ापन होता है, और जहाँ फैक्ट्री चल रही होती है तो वो क्या होता है। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के नाम से हम इख्तिताम करते हैं। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर है। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीक हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से एथिकल इश्यूज रिगार्डिंग द मेडिकल राइटिंग उसको कंटिन्यू करेंगे। डॉक्टर फातिमा जवाद विल कंटिन्यू and to Dr. Ayub, we will also arrange a physical workshop at Azad Jammu Kashmir Medical College. I am asking Dr. Fatima Jawad and you, she may come in Muzaffarabad to conduct this workshop. Thank you so much. Allah Hafiz, fi amanillah. Thank you very much, sir. Allah Hafiz. Allah Hafiz.